Hello, am I audible to everyone? Okay, so thank you so much, dear viewers. As I have already told you how to initiate, why to initiate, how to start conversation with the people. Should we go ahead and talk to people in English, or we should wait for our chance? Should we wait for a chance? क्या हमें अपने चांस के लिए वेट करना चाहिए, या फिर वेरी गुड इवनिंग ममता, सो नाइस ऑफ यू एंड यू हैव ज्वाइंड अस. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन. So it is very beautiful day. It is Sunday today, and I'm here before you to start the conversation with you in English. Okay, and today we have taken the topic how to learn, how to learn, how to learn English language conversation through story. It is very beautiful, and I want to first of all there is a good news in my means there is a good news in my home. Means there is my nephew, and he has blessed with a son today. So I am so happy. And if I get time, I'll distribute sweets among my friends. It is a very beautiful day. A good news I received today that my nephew uh, Jay Prakash, he is blessed with a son today. So many congratulations to Jay Prakash and his wife Sanju. They are our viewers. They always watch the channel time to time. They become live and they are always ready to learn something. Okay, so dear uh, viewers, today we will discuss how to talk in English through story. And now, first of all, I would like to tell a small story, then a long story. A session of storytelling used to go. Very good evening, Rameshwar. A session of storytelling was going on, but due to board exam, it is somewhat stopped. But once again, वी हैव स्टार्टेड. हमने शुरुआत में स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश में स्टोरी सुनाना शुरू किया था. मेरा उद्देश्य था कि आप अगर स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी अगर आप सुनते हैं तो आपकी इंग्लिश स्टोरी सुन के, इंग्लिश की स्टोरी सुन के आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होगी. और ये सेम बात है, आपको किसी न किसी तरीके से आपको इसमें आपको बिजी करना है, आपको वोकल बनाना है, आपके अंदर वर्ड्स डालने हैं. हाउ टू पुट वर्ड्स इन योर माइंड. Even it is by story, it is by talking to you, it is by conversation, it is by bringing people before you, it is by using any means of learning English. आपको लिख के बताएं, पढ़ के बताएं, सुना के बताएं, ये सारे का उद्देश्य क्या है? आपका लैंग्वेज अच्छा करना है, आपके लैंग्वेज को इंप्रूव करना है. और ये कैसे इंप्रूव होगा आपको पता है. सो वेन एवर यू विल लिसन एंड लिसन एंड लिसन एंड लिसन, सो इट विल बिकम कॉमन. It will become a common matter, and slowly or gradually you will learn how to speak in English, and your English language conversation will become very dominant. Never be afraid. कभी भयभीत ना बनो. Okay, so very first story I would like to tell you, the story of Manoj. The story of
The story of Manoj. There was a boy named Manoj. The story starts, there was a boy named Manoj, and he was a student from Hindi medium. He was a student of Hindi medium. He didn't know even ABC about speaking in English or about other language. He was from a very rural area. A rural area means ग्रामीण क्षेत्र से था. He did not know even how to talk smartly. But he was very good at other subjects. He was very good at mathematics. He was good at science. He was good at Hindi. So anyhow, he got admission after plus two. He entered into graduation. He took admission in some University of Lucknow, and what started, just listen to the story. So in every university, it is very common. Nowadays, there is a ban on ragging, but in each and every university, there is ragging is common. आज भी रैगिंग होता है, लेकिन वो सामने नहीं आता है या बहुत बहुत नॉमिनल होता है, तो लोग उसको उजागर नहीं करते, किसी को बताते नहीं. So ragging is common even today. So what happens? Manoj, he took admission in Lucknow University, and there he started pursuing graduation. So first, at the very first day, means another thing was he was very emotional by nature. Nature से वो बहुत emotional था. He was very emotional. Okay, so what happened? One day, when he entered the university gate, he found that few of boys and girls, like 10 in number, 10 संख्या में थे, and they were standing at the very gate, at the gate of the university, and Manoj was trying to enter the university. There was crowd, and they could understand. जब कोई नया होता है किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो देखने वालों को पता चल जाता है कि वो इनकॉन्फिडेंट है, डरा हुआ है, इसलिए वो थोड़ा सा चलने में उसको हिचक हो रही है. He is feeling afraid. So gradually, Manoj was going towards his block, and at the very gate, he was stopped by few boys and girls. Okay, there was first lobby of boys were standing there. They asked him, "What is your name?" He told them, "My name is Manoj, and I'm a student of BA Part 1." So the boys, they said, "Okay, from where you are?" And he told them, "I am from Sultanpur." "Okay, Sultanpur. So why you came here?" "Okay." And this way, they started asking different questions. They put they put him into exercise. They asked him to take off his shirt, है ना? And he took off his shirt. He became naked, and they asked him to run on the road. They asked him to do sit up, and this way he could not understand. And boys were very smart who were taking ragging, but he was unable to even speak a single word because he was afraid. And when anyhow he was saved from there, when he went from there to university, his block, he met with a professor, uh, and the professor asked him, "What happened, Manoj?" He asked him his name. He told that his name is Manoj, and he explained the story that he was insulted at the gate. It was very first day, and the reputation of the university in his mind, it was quite well. And now he is unable to forget that moment which happened with him. And the boys,
to his ragging and he was unable to forget it. Mr. Professor, he encouraged him. He said, "Tum gaon se ho, you are from village, and you cannot understand these things, and they were making you fun." It was a small incident. Manoj tried to forget it. He tried to forget it. It passed 1 or 2 days. Again, at the very gate, he found that few girls were standing there. Listen, रैगिंग किसकी होती है? रैगिंग उसकी होती है जो बोलने में हिचकते हैं, जो सामने वाला कह रहा है सुनो कर दो, लगेगा कि डेयरिंग है, and they were asking questions in English, they were speaking in English, and Manoj, he was very shy one, he could not understand it. He could understand it, but he was unable to speak it out. उसे समझ में तो आता था, लेकिन वो बोल के बाहर निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल था. It was very tough for him to speak it out, and it becomes like that. हमने देखा है, आप भी देखते हैं, आप भी जानते हैं, आपके मन में शब्द तो आते हैं, पर आपको बोलने में हिचक होती है, और ऐसा इसलिए होता है because you feel afraid. And this was the disquality of Manoj. He was also afraid. He could not understand it. So when the professor met him, he explained that even boys or girls or anyone of the university can put him into ragging. कोई भी उसकी रैगिंग ले सकता है. Manoj he was very surprised and even more angry. He asked the professor, "Why am I being ragged like this? मेरी रैगिंग ऐसे क्यों होगी? What is there? Why they are torturing me?" Mr. Professor said, "Because you are shy. क्योंकि तुम शाई नेचर के हो, तुम शर्मीले हो, इसलिए तुम्हारी रैगिंग हो रही है." And this was an ignition point for Manoj. मनोज को समझ में आया कि ये टाइम है, आई हैव टू इंप्रूव माई बिहेवियर, आई हैव टू बी बोल्ड. Another thing was there. The boys and girls who were trying to put him into ragging, they were speaking different language, means he knew that they were speaking in English. Manoj could not understand. He had only one chance, means only one idea, that if he learns English, he will be able to face them, he will be able to reply them, he will be able to say anything. Otherwise, whenever he used to speak a sentence or word, they used to call him Dehati. And that, it is a kind of calling names. It's a kind of abuse. किसी को देहाती बोलना एक तरह से गाली देना है. So people around him, they used to make his fun. Even it was about ragging. 1 or 2 days he faced ragging and he was able to overcome that situation. But it started in his class also. पहले तो गेट पे रैगिंग होती थी, अभी क्लास में शुरू हो गया. It became very common. He could not understand it. अब कॉमन हो गया कि क्लास में भी गर्ल्स एंड बॉयज दे यूज्ड टू मेक हिज फन. क्लास में भी बॉयज और गर्ल्स मनोज का मजाक उड़ाने लगे. Why? Because he was shy by nature. He could not express his thought. वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता था. And if you are unable to express your thought, people will make your fun. तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, वो लैंग्वेज कोई भी हो. पहली बात तो मैंने कई बार बोला है, इवन बॉयज और गर्ल्स, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी शाई, यू एक्सप्रेस. माई ओन सन, मैं बता दूं, मेरा अपना बेटा शाई बाय नेचर है. वो शाई है. मेरा बेटा रिदम, वो शाई बाय नेचर है. क्यों? क्योंकि वो बोलता नहीं है.
हो सकता है कोई सिचुएशन हो वो मुझे भी बताने में डरता है कि लोग मेरा मुझे परेशान करते हैं या मजाक उड़ाते हैं. आई नो अबाउट दिस and I'm trying to convince him to rebel, to reply people. लोगों को जवाब देना सीखिए. If you cannot reply anyone, if you are unable to reply anyone, you will not be able to overcome the situation. अगर आप लोगों का जवाब देने में असफल हो जाते हैं तो आप इस सिचुएशन को जीत नहीं पाओगे. You will not be able to win or overcome this situation. आप निकल नहीं पाएंगे बिकॉज द वर्ल्ड इज वेरी स्मार्ट. ये संसार पूरा बहुत स्मार्ट है. आप अगर शाई बाय नेचर है, आप अगर लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी बात चुपचाप सुनते हैं, जवाब नहीं देते हैं, तो लोग आपका नाजायज फायदा उठाएंगे. दे विल टेक बेनिफिट ऑफ इट. लोगों को मनोज वॉज very much, and he used to reply people, but because of his shy nature, he used to procrastinate it, delay it. वो डिले करता, चलो कल जवाब जरूर देंगे. When he returns his room, he used to think, कल मैं जरूर जवाब दे दूंगा. ऐसा लोगों में होता है कि लोग डिस्प्यूट के टाइम में, झगड़े के टाइम में अपनी बात नहीं कह पाते हैं and they delay it. They procrastinate. Okay, I will reply him tomorrow. कल उसको जवाब जरूर देंगे. And slowly, Manoj used to, he used to suffer. But one day, a beautiful incident happened. एक दिन बहुत ही खूबसूरत घटना घटी. And one of his classmates, उसकी एक क्लासमेट थी जिसका नाम था रागिनी. रागिनी was very careful about the sensitivity of Manoj. She used to listen to everyone's criticism regarding Manoj every day. हर रोज रागिनी मनोज का मजाक उड़ता हुआ देखती थी. She was witnessing everything. Once or twice she had opposed. एक दो बार उसने अपोज भी किया था. But Manoj was shy. So what could she do? Other boys and girls used to say to Ragini, why do you interfere? We are making fun of this boy. Why do you interfere? तुम इंटरफियर क्यों कर रही हो? So this way, Ragini was quiet. She could not do anything. So she decided to help Manoj, and she met him in the lawn, and there she asked him, why do you listen to everyone? Why don't you reply? Manoj was very much shy. First of all, people had told him stay away from girls. तो लोगों ने बताया था कि गर्ल्स से दूर ही रहना. Now he was more afraid. ये तो मुझे घर के लोगों ने बताया है, मेरे दोस्तों ने बताया है, गर्ल्स से दूर रहना. तो ये तो और कहीं किसी मामले में फंस गया तो प्रॉब्लम होगी. So he was trying to stay away. He said to her, I don't want to talk to you. कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मुझे पता है लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं. And he went away. So 1 or 2 days more passed. एक दो दिन और बीत गए. And Manoj was unable to overcome the situation. अब मनोज इस सिचुएशन से जीतने में बहुत दिक्कत में था. He could not reply. Even he could not cook his food. He could not cook his food. He used to think whole night, whole evening about the torture which he used to suffer in the class or in college. वो अभी भी कॉलेज का, क्लास का जो सिचुएशन होता वो घर पे सोच रहा होता. मीन्स अपने रूम पे सोच रहा होता. Day by day, he was being lost in his thought. वो अपने विचारों में खो जाता. वो सोचता कि मुझे क्या करना चाहिए. And another day, means next day, once again, Ragini came in front of him and she said, people have told you about girls, but I am not that type of girl. I am not a bad girl.
I'm a good one. I want to be your friend. I want to help you out. I want to save you from these nasty boys. Nasty means गंदे. मैं इन गंदे बच्चों से तुम्हें बचाना चाहती हूं. And if you believe, you trust me, see my ID card. She showed him her ID card and she said, see, my name is Ragini and I am here to help you out. If you like, please come ahead. Please let us be friends. I will talk to you, I will help you out. And why are you so much of shy? And this way, Manoj could understand what happened. He became her friend. And she motivated him to reply. Okay, he summoned the courage. उसने हिम्मत जुटाई. He summoned the courage. He started talking to her. Now he has one partner, one friend in the college. अब उसके पास कॉलेज में एक दोस्त था and he could tell her anything. अब उसे वो बता सकता था, not about his personal matters but the matters of college and subject and friends and all. They used to discuss whenever they means from gate to uh, the department and from department to the gate. So they used to walk side by side along with each other. And this way, the boys and girls, other boys and girls, they used to follow this. They could understand that one friend he has got. So why I told you to make friends? Because you need a friend. And what about friends? We have a line. A friend in need is a friend indeed. This line I write: a friend in need is a friend indeed. देखिए कहावत है कि एक अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. एक दोस्त जो समय पर काम आए वही अच्छा दोस्त होता है. अंडरस्टैंड? एक दोस्त जो समय पर काम आए वही अच्छा दोस्त होता है. ठीक है. अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. ठीक है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाउ एंड both of them they carried their friendship, and day by day he improved his even his language English. He started speaking with her and they both of them they made some records. They passed graduation. They become good people and Manoj was succeeded. He overcame the situation and the story ends with the success of Manoj. So dear friends, I told you how to learn English language conversation through story. It was a very small story, I told you, a small story, and through which I tried to convey a message that, getting something in life, first of all, that is your language. Food God gives you. You get food. Nobody dies hungry in this country or in this world. And God feeds everyone. अगर कोई कहे कि हमें खाना वो खिलाता है तो वो गलत है. God feeds everyone because God is there. I believe in God. I am theist. I believe in God. और ईश्वर आपको सब कुछ देता है, सब कुछ देगा भी. God cannot stop you. If you work hard, God is always there with you. God is always there with you. Nobody can stop you from your progress because
Time and tide waits for none. Only you have to follow this rule. समय और ज्वार, ज्वार जानते हैं, टाइड जो समंदर में आता है, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए आप सभी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल चांस है कि आप समय को पीछे छोड़ दीजिए। आप यू मूव अहेड ऑफ द टाइम, मूव अहेड ऑफ द टाइम, समय से आगे चलिए। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम? आज के समय का जरूरत क्या है? जैसे आज के समय में किस चीज की मांग है, आप बताइए। इफ यू टॉक टू पीपल, इफ यू कन्वर्स विद द पीपल, अगर लोगों से गली में, मोहल्ले में, चौराहे पर, ऑफिस में, बैंक में, रेलवे स्टेशन पे कहीं भी बात करिए, तो आपको दिखता है, आपको लगता है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे वो बढ़ते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप मुझसे संपर्क करिए, आपको जॉब मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन प्राइवेट जॉब आपको मिल सकती है। क्यों? अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आपका हर ऑफिस में रिस्पेक्ट होगा। आपको बैंक में मिल सकता, प्राइवेट बैंक में मिल सकता है, आपको कहीं भी, है ना, एडहॉक पे नौकरी मिल सकती है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आपको अच्छा पैकेज भी मिलेगा। सो योर कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट। एंड नाउ we will talk about another story today, and that story is a bit longer. This is the story of a village girl, Shalini, and the story is very interesting. So let us go ahead. The story of Shalini we'll discuss today. The story of Shalini from MP. Ah, yes, very good. Nice to hear this. Hard work is the key to success. Hard work, hard work is the key to success. कहते हैं कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी है। कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको यस ममता पटेल, वेल डन, वेरी गुड, एंड आई एम सो हैप्पी व्हेन आई हियर यू पीपल सेइंग लाइक दिस। जब आपको मैं ऐसे कहते हुए या मेहनत करते हुए सुनता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। आई फील बेटर इन माई हार्ट, आई फील गुड, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी माई स्टूडेंट्स गोइंग अहेड। मैं चाहता हूं कि वो आगे जाएं, उनको सक्सेस मिले, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड। सो देयर वाज अ गर्ल नेम्ड Shalini, you know, and she was from MP, Madhya Pradesh. The name of the district was Mahar, Mahar, Mahar district. And this district is known very well for Mahar regiment in army. And I have visited this place, but the story is very interesting, and just boys and girls, whoever want to learn how to speak in English, they will have to listen to this story, and through the story you learn the situation, the words, the common words, or maybe idioms, phrases. Okay. uh, Shalini was from a very poor background. Her father was
a poor farmer. Her father was all in her family. Means only his father, her father, Shalini's father was the person who used to earn money. Okay, only one person was there who used to work in others' field, or maybe in others' houses, or maybe in other choraha, in village, in city, wherever he used to get work from morning till evening. He used to, collect money. He used to work hard. He was not a beggar. पहले remember it. भिखारी नहीं था. He used to work hard. And in the evening, when he returned, he used to say to his daughter Shalini, Shalini से आके father कहता, बेटा, you are the only hope for us. हमारे लिए उम्मीद सिर्फ तुम हो. Now listen, when Shalini was very young, when she was young, studying in primary school, she could not understand the meaning of this sentence. इसका मतलब शालिनी को समझ में नहीं आता कि पापा क्या कहते हैं, कि you are the only one hope for us. केवल मैं उम्मीद हूं, क्या है, क्या मतलब है. Gradually, Shalini grew up. She took admission in class 6 and then class 9th. When she entered class 9th in some other college or maybe intermediate college, there she learned that she was from lower caste, and the boys and girls studying in the college, they were from higher caste. And okay, and they used to make her fun because of her dress, shabby dress. क्योंकि वो गंदा ड्रेस पहनती थी, इसलिए बाकी लड़के उसका मजाक उड़ाते थे. And Shalini could not understand it. First 2 or 3 days, she could not understand what is going on. What is there actually? Why people laugh at me? लोग मेरे पे हंसते क्यों हैं? Why do they laugh at me? Why even my classmates, even girls, even boys, the boys and girls from my class, why do they laugh at me? वो मुझ पे हंसते क्यों हैं? क्या वजह है? Shalini was unable to understand all the things. Am I audible to everyone? Please reply. Am I audible to everyone? The voice is clear? Please do comment. Say yes, sir. Okay. Shalini was unable to understand anything. Yes, Rameshwar, thank you. So Shalini was very much afraid. Day by day, she was going very down. Her study or maybe her education means knowledge or her confidence, you can say. उसका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा. नाउ द क्लास टीचर मिसेस वर्मा, शी केम अहेड. मिसेस वर्मा सामने आई और उन्होंने शालिनी से पूछा कि तुम चुप चुप क्यों रहती हो? वाई आर यू सो क्वाइट? वाई आर यू सो क्वाइट ऑलवेज? तुम हमेशा चुप क्यों रहती हो? नाउ शालिनी got an ignition. I should tell the matter to my class teacher. मुझे मिसेस वर्मा को सब बताना चाहिए. She said, no problem is there, ma'am, I'm okay. First day she denied. She did not tell anything because she was afraid कि अगर वो मिसेस वर्मा को सब बताती है तो वो अन्य बच्चों को डांटेंगी और वो बच्चे फिर से उनका मजाक उड़ाएंगे. इस तरह से वो समझ नहीं पा रही थी. बट मिसेस वर्मा वॉज वेरी स्मार्ट एंड शी वॉज क्यूरियस एनफ टू टेक केयर ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स एंड शी इनिशिएटेड इन द क्लास. शी सेड दैट nobody from the class is going to make her fun. Now
she became very strict and she pushed Shalini to go ahead. She asked questions from Shalini. She started asking and loving her. And day by day, Shalini started growing. Shalini lost the fear and she completed her plus two and she got admission in university. Now she could understand what her father used to say, Beta, you are the only hope for us. केवल तुम ही हो हमारी उम्मीद. Now people, because Shalini got to know all gradually she understood the meaning. She understood the meaning of education. Now, Mrs. Verma, the class teacher, she became the best friend of Shalini and she was there to help her. And gradually she took admission in university and there she stood rank 1 in the University of MP, the University of Bhopal. And there she got some prize. कुछ उसे इनाम मिला, कुछ प्राइज मिला, and that she brought home. She gave it to her parents and she credited, means she told the people that all the credit goes to Mrs. Verma and her parents. उसने कहा कि उसकी सफलता के राज उसके पिताजी और उसके माताजी और साथ में मिसेस वर्मा जो क्लास टीचर रही हैं क्लास 9 to 12, वो उनके सफलता के मददगार हैं, वो हैं जिन्होंने उसके लिए रास्ता खोले. Shalini appeared in various exams. She started doing masters from the same university and she did not stop thinking about her father's line that, Beta, you are the only hope for us. Yes, Mamta Patel. Shalini, now that line which her father used to say at home, now her father has become old. He is unable to work in the field. He is unable to go to other people's house and work. He is able to only eat. So his parents, his father, his mother, they are very alone. Shalini was the single daughter of her parents, the single child of her parents. She could understand now Mrs. Verma, the class teacher, means the teacher. Now she used to explain her how to go ahead, what to do. She encouraged her to join some coaching center, to teach some boys and girls and collect some money to help her parents. अब शालिनी को समझ में आया कि मम्मी पापा को क्या लगता है, पापा ऐसा क्यों कहते थे कि बेटा सिर्फ तुमसे उम्मीद है. इसका मतलब शालिनी को अब पूरी तरह से समझ में आ चुका है और शालिनी अब अलग अलग कोचिंग सेंटर में कुछ घंटे दे करके पढ़ा करके और वो अब अपने पेरेंट्स को, शी फॉरबिड हर फादर टू गो टू वर्क एनीवेयर एल्स. अब उसने अपने पिता को कहीं भी जा करके काम करने से मना कर दिया, बिकॉज उसके पास, शालिनी के पास कोई अपना दूसरा उपाय नहीं था जहां से उसको पैसे मिल सके और फादर को भी काम पे भेज करके अपने फादर को भी काम पे भेज करके शालिनी अब कोई रिस्क नहीं ले सकती थी. उसके फादर अक्सर बीमार रहते थे. अब शालिनी को एक ही सुरेंद्र कुमार, अब एक ही उम्मीद थी शालिनी के पास और वो ये था कि वो खुद काम करे. और शालिनी ने, शी स्टार्टेड वर्किंग, शी स्टार्टेड टीचिंग इन वेरियस स्मॉल कोचिंग्स, शी स्टार्टेड अर्निंग सम मनी एंड हर पेरेंट्स, father and mother, both used to wait for the sums, for the money. Everything was going very fine. She completed master's degree. She used to send money to her home. Her parents were quite happy. Now they were being fed properly. अब उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता क्योंकि शालिनी समय समय से वो अपने पेरेंट्स के पास पैसे भेज दिया करती थी.
शालिनी को पैसे की लत लग गई। शालिनी अपना टाइम पूरी तरह से एंगेज कर दी। शालिनी शालिनी डिड नॉट हैव टाइम टू स्टडी। शालिनी के पास स्टडी के लिए अब समय नहीं रहता। शालिनी के पास एक लेटर आया। मिसेस वर्मा, द स्कूल टीचर, शी हैड सेंट हर अ लेटर। मिसेस वर्मा ने एक लेटर लिखा था शालिनी को कि प्लीज टेल मी योर रूटीन, काइंडली टेल मी योर रूटीन। Hello, Brizmohan. Most welcome from Gujarat. Thank you very much. So Shalini was able to understand. She could not do anything. She had only hope to work hard, earn money, and serve her parents. She used to work hard, she used to earn money, and she used to send the money to her home. Her parents were very happy because money was enough, but it was not the ultimate goal of Shalini. Shalini का आखिरी इच्छा ये नहीं थी, but due course of time she had forgotten the responsibility, she had forgotten her aim of life. शालिनी अपनी लाइफ के एम को भूल चुकी थी. Now there was Mrs. Verma and she sent her a letter and she asked her what was her daily routine. Now Shalini said, every day I teach from morning till evening to earn money. I am teaching in various coaching centers and I am earning and I am feeding my parents very well. But yeah, I don't get time to study. She had written this in her letter and Mrs. Verma, the school teacher, was very much shocked. She had not nourished a sapling for this purpose. उन्होंने एक सैपलिंग को, एक पौधे को इसलिए नहीं लगाया था कि इस तरह से वो कोचिंग ट्यूशन पढ़ा के और वो अपना करियर पूरी तरह से नष्ट कर दे. उन्होंने सिर्फ माध्यम बताया था कि अपनी पॉकेट मनी चलाने के लिए तुम हार्डवर्क करो, तुम पैसे कमाओ. बट उन्होंने ये जरूर कहा था कि कीप ऑन वर्किंग हार्ड, डू नॉट फॉरगेट योर एम ऑफ लाइफ. Now, Mrs. Verma, without thinking anything, she took the morning bus and went to the university where he met Shalini. She met Shalini. Mrs. Verma was the only one solicitor who could encourage Shalini to work hard. Shalini was not able to understand that what she could do. उसे घर पे पैसे देने की जरूरत थी, उसे अपने पॉकेट मनी की जरूरत थी, उसके घर पे खेत थे, वो गिरवी थे, उसकी मां के जेवर गिरवी थे, कुछ भी नहीं था, तो इसलिए पैसे के पीछे वो भागने लगी. मिसेस वर्मा ने समझाया. She told her that you don't have to only teach in coaching center, you have to become either professor or an officer. या तो तुम्हें प्रोफेसर बनना है या तुम्हें ऑफिसर बनना है. तुम्हें कोचिंग ट्यूशन में बिजी होके एग्जाम को नहीं भूलना है. You make a particular time, you take a particular time to work in coaching center, but don't forget your aim of life. तुम अपनी लाइफ के एम को मत भूलो. और सुन लीजिए, whoever is live today, please do like the video. आप सभी जो भी लाइव हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए. देखिए, अगर आप अपना एम ऑफ लाइफ भूल जाते हैं पैसे के पीछे, तो आप अपने पांव में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं. आप अगर अपना लक्ष्य भूल करके और अपने स्कूलिंग और कॉलेज के पढ़ाई के टाइम में आप कहीं और पैसे पे, कहीं और नौकरी पे ध्यान लगा करके और आप अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं. नहीं 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 नहीं, आप कुल्हाड़ी में पांव मार रहे हैं. समझ लीजिए, अगर आप अपने लक्ष्य को भूल करके और आप पॉकेट मनी से ज्यादा पैसा जुटाने के लिए और ऐशो आराम की जिंदगी और बाइक से चलने की
या घूमने की जिंदगी जीना चाहते हैं और अभी अपने लक्ष्य को भूल करके और इधर उधर छोटे मोटे कामों में पूरी तरह से इनग्रास्ड हो जाते हैं, देन यू फॉरगेट योर एम ऑफ लाइफ एंड दिस वे यू स्पॉइल योर करियर। तो इस तरह से आप अपना करियर स्पॉइल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। शालिनी हैड फॉरगॉटन हर एम ऑफ लाइफ। when shalini was there when Shalini was there in her school time, she used to promise Mrs. Verma that she would become an IPS officer, and this was there in Shalini's heart, but for a time being she had forgotten her aim of life. थोड़े समय के लिए शालिनी अपने लाइफ के एम को भूल चुकी थी। Mrs. Verma, she came to Shalini, she discussed with her, she spent 2 or 3 days with her in counseling. She kept on soliciting her, she kept on making her understand the importance of life. The importance of life, the importance of time, the importance of age. आपकी नौकरी का एज होता है 18 से 35, 18 to 50, 18 to 35 years. You cannot get job after 35 years, and minimum age is 18 years. So 18 to 35 you have to work hard. और अगर आपने 18 साल की उम्र में नौकरी के चक्कर में, दो पैसे कमाने के चक्कर में अपने करियर को भूल गए तो आप खुद को भूल गए। रिमेंबर इट, यू कैन नॉट सक्सीड। आप सक्सीड नहीं कर सकते, आपको आप खुद रोक रहे हैं। तो आप अपनी पांव में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, आप अपना पांव कुल्हाड़ी में मार रहे हैं। कुछ लोग कुल्हाड़ी पांव में मारते हैं तो वो मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पांव ही कुल्हाड़ी में मार देते हैं तो उसको क्या कहेंगे? एंड शालिनी कुड अंडरस्टैंड, शी क्राइड इन द लैप ऑफ मिसेस वर्मा। मिसेस वर्मा के गोद में बैठकर रोई। शालिनी ने प्रॉमिस किया कि कुछ समय के लिए वो अपना लक्ष्य भूल गई थी, लेकिन वो भूलेगी नहीं। नाउ शी विल कैरी ऑन वर्किंग टुवर्ड्स हर एम ऑफ लाइफ एंड शी विल reduce the way the work she used to give time in coaching center. कोचिंग सेंटर से थोड़ा कम पैसे लेगी, थोड़ा कम काम करेगी, और शालिनी ने प्रॉमिस किया और वो लगातार फिर से मेहनत करना शुरू किया। नाउ मिसेस वर्मा was happy. She wanted this because she knew that Shalini was a genius girl. देखिए, जीनियस होना क्या है? आपके मार्क्स आपको जीनियस नहीं बनाते हैं, आपका क्यूरियस होके काम करना आपको जीनियस बनाता है। मैंने बहुतों को देखा है जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, +2 में मार्क्स कम हैं और वो एवरेज से बिलो स्टूडेंट रहे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड पुअर रहा है, लेकिन क्या होता है लास्ट में, अगर वो कंसिस्टेंटली लगातार तरीके से काम करते रहे हैं तो लास्ट में उनकी विजय हुई है, लास्ट में उन्होंने जीत हासिल की है। एंड दैट आई वांट टू से, और मैं वही कहना चाहता हूं कि शालिनी एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसके अंदर आग भरी हुई थी। नाउ यू हैव टू कीप फायर इन योर सेल्फ। आपको खुद के अंदर आग रखनी होगी। यू विल हैव टू बी फायर्ड एंड डोंट शो योर कॉन्फिडेंस टू एनीवन। आप अपने कॉन्फिडेंस को अपने अंदर जिंदा रखो, किसी को दिखाओ नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं है। शालिनी अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, एंड शी क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। उसने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया। मास्टर डिग्री के बाद 1 साल गैप करने के बाद उसने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया, प्री निकाल लिया। और अब मिसेस वर्मा वाज इन कम्युनिकेशन, लेटर आते जाते थे। मिसेस वर्मा एक्सपेक्टेड अ लॉट एंड शालिनी वाज देयर। जब कोई टीचर एक्सपेक्ट करता अपने स्टूडेंट से और उसे अपना स्टूडेंट ग्रो करता दिखाई देता है, तो उस टीचर को
उस आम के पेड़ की तरह से दिखता है अपना स्टूडेंट, जिसे उसने कई साल पहले पौधा लगाया और अब उसमें बौर आ गया है, अब उसमें फल आएगा, अब रिजल्ट आएगा। टीचर्स आर वेरी सेंसिटिव। ऑल द टीचर्स, मैं 1-2% को छोड़ के बात कर रहा हूं, 1-2% को छोड़ दीजिए, ऑल द टीचर्स आर वेरी सेंसिटिव। सभी टीचर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और होना भी चाहिए। टीचर्स आर always curious to see the result of their students. And Mrs. Verma, she informed Shalini that she has cleared her pre-exam. Now she had to focus on mains, but she had to keep on working in the coaching center also, because there were students who used to wait for Shalini. क्योंकि कोचिंग में भी कुछ बच्चे थे जो शालिनी का वेट करते थे उससे पढ़ने के लिए, और शालिनी कुछ बच्चों को खुद पर्सनली जानती थी जो बहुत अधिक इंतजार करते थे शालिनी का। और इस तरह से शालिनी ने 1-2 घंटे पढ़ाना जारी रखा, लेकिन उसने अपना पूरा फोकस मिसेस वर्मा के लक्ष्य पर दे दिया। मिसेस वर्मा एक सॉलिसिटर थी, उन्होंने उसको समझाना जारी रखा, उसको आगे बढ़ाना जारी रखा, और परिणाम क्या हुआ? आफ्टर 6 months, Shalini received a phone call. Shalini received a phone call, and from the other side, there was speaking Mrs. Verma, and she told her that she had qualified second round, even mains exam. Shalini was taking class, and the coaching master told her that there is a call for you. She did not have her own cell phone. शालिनी ने सेल फोन उठाया, और जब उसे पता चला कि उसका मेंस क्लियर हो गया है, तो शालिनी के हाथ कांप रहे थे। शालिनी को बिलीव नहीं हो रहा था, शालिनी को ट्रस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि शालिनी कभी सोची नहीं थी कि बिना कोई कोचिंग किए, बिना दिल्ली गए, बिना इलाहाबाद गए, मेरा कैसे हो गया। शालिनी ने मेंस क्लियर कर लिया था, और पता है शालिनी के पास उतने अच्छे कपड़े नहीं थे जिससे वो इंटरव्यू दे सके। शालिनी को मिसेस वर्मा ने अपने कपड़े दिए, मिसेस वर्मा ने समझाया, उन्होंने कपड़े पहनना सिखाया। और जब कोई आईएएस का इंटरव्यू देता है तो बेसिकली उसका ड्रेसिंग सेंस शानदार होना चाहिए। शालिनी, शी पुट ऑन हर mother's dress, she used to call Mrs. Verma sometimes mother. कभी कभी मिसेस वर्मा को वो मां का दर्जा दिया करती थी। Today, Shalini dressed up, and there where she was going to appear in the interview session, Mrs. Verma was there with Shalini. शालिनी ने अपनी मदर का, अपनी टीचर का पैर छुआ। वो मिसेस वर्मा थी, उनको टीचर कम मदर दोनों मानती थी। उसने पैर छुआ, आंख में आंसू भर आए। शालिनी ने कहा कि मैं जीत के आऊंगी। मिसेस वर्मा ने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, तुम्हें अपना बेस्ट देके आना है, क्योंकि मिसेस वर्मा को पता था कि शालिनी नहीं जानती है कि पूरे इंडिया में 0.1% लोग सक्सेसफुल होते हैं आईएएस के एग्जाम में। शालिनी भी जानती थी, लेकिन वो इमोशन में शालिनी ने ये अपनी मैम से कह दिया कि मैं जीत के आऊंगी। और मिसेस वर्मा की अपनी कोई औलाद नहीं थी, जो मैंने आपको पहले स्टोरी में नहीं बताया। मिसेस वर्मा, शी हैड एक्सेप्टेड शालिनी एज हर ओन डॉटर। मिसेस वर्मा के हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे, वो अकेली थी, और वो शालिनी को बहुत मानती थी। मिसेस वर्मा ने शालिनी को हिम्मत दिया और कहा कि गो फेस आई टू आई, गिव योर इंटरव्यू इन आई कॉन्टेक्ट, डोंट फॉरगेट दैट आई एम देयर विथ यू। भूलना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें आंखों में आंखें डाल के इंटरव्यू देना है। यू हैव टू फेस योर इंटरव्यू एंड डोंट फॉरगेट, एंड विद अ स्माइलिंग फेस यू फेस द इंटरव्यू। इंटरव्यू फेस किया। When Shalini returned,
she told her mother, she told Mrs. Verma that everything was fine in the interview and it was quite well. She could not know. She was able to answer some questions. She was unable to answer some questions. So what she could do, she was a bit hopeless also. मिसेस वर्मा ने कहा कि पहले ही कह रखा था कि जिस क्वेश्चन का आंसर ना आए कह देना सॉरी सर. He will ask you another question. The interview panel is very smart. Interview is a kind of examination where your truth, your confidence is checked. And Shalini, one day, she received a call while she was in the same coaching center and she was selected as an IAS. She was selected as an IAS. And now Shalini, she did not believe it. She could not believe it. She was extremely happy. And this way, Shalini proved her talent before her teacher. She proved the hope of her parents, and it was a quite successful story of Shalini. Shalini became successful in her life. Thank you very much. We will see again tomorrow right at 8 o'clock. आप wait करिए and it will be really a beautiful session tomorrow. That's all about the story. Thank you very much.